Hello everyone. Here I will give you the explanation of chapter 3, grade 5th English, and the name of the chapter is A Glimpse of the Missile Man's Life. Everybody knows who is known as the Missile Man of India? Dr. APJ Abdul Kalam. So very clear, in this chapter we will study some incidents about Dr. APJ Abdul Kalam's life. Some persons do such miracles in their life that they become famous and known even after their death. APJ Abdul Kalam is one of them. So let's read the incidents of his life. Dr. APJ Abdul Kalam is regarded as an ideal Indian and a source of inspiration for people all over the world because of his work. No doubt, Dr. APJ Abdul Kalam is inspiration for all of us. He has done so much work. उन्होंने इतने काम किए और इतने अच्छे काम किए कि हम सब उनसे इंस्पायर्ड हैं. APJ Abdul Kalam was born in a small village of Rameshwaram, Tamil Nadu on 15 October 1931. So, Dr. APJ Abdul Kalam का birth हुआ रामेश्वरम के small village में, which is located in Tamil Nadu, and that on 15th October 1931. When Dr. APJ Abdul Kalam was to be named, he got the name after his father name, Jainul-Abdin, Abul Pakir Jainul-Abdin Abdul Kalam or APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam learned to give importance to human values from his father, and from his mother he learned good nature, simplicity, and जो नेशन के टुवर्ड्स जो डिवोशन थी वो उन्होंने अपनी मदर से ही सीखा. उनके जो मदर थे आशी अम्मा बहुत सिंपल और पायस मीन्स एक रिलीजियस लेडी थे. Kalam was a few years old when he started liking the priest who often visited their home. Appa Shastri uncle has come, he said, every time the priest of Rameshwaram temple came over. कलाम की बहुत कम एज थी जब उनके घर में प्रीस्ट आते थे. रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट होते हैं जो रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करते हैं, जिन्हें पुजारी भी कहते हैं. एंड कलाम बहुत खुश होते थे जब भी प्रीस्ट उनके घर आते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था. He used to tell his father that Appa Shastri uncle has come, and Kalam, still a young boy, sat by the side of his father and learned many good things from the meetings between his father and the priest. Kalam, still a young boy, sat by the side of his father and learned many good things from the meetings between his father and the priest. नाउ अब जो भी बातें उनके फादर और प्रीस्ट के बीच में होती थी, जो भी वो डिस्कस करते थे, एंड जो कलाम थे वो अपने फादर के साइड पे बैठ जाते थे. जो भी कन्वर्सेशन होती थी उनसे वो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते थे. His parents were religious minded but they were not conservative. डॉक्टर APJ Abdul Kalam के जो पेरेंट्स थे वो रिलीजियस थे but they were not conservative. वो old fashion unchanging नहीं थे. Abdul, call your appa, food is ready, his Ami used to say every evening. Daily they sat together on the kitchen's floor and ate the food spread on the banana leaf before them. Now every evening Abdul Kalam's mother used to say to Abdul to call his father for the food, and all of them used to sit together on the kitchen's floor and ate the food, and the food used to be on banana leaf. Rice, sambar, homemade pickle and coconut chutney was the feast that APJ Abdul Kalam learned to love to eat. This is the food APJ Abdul Kalam loved to eat. Feast होता है दावत. In Abdul Kalam's childhood, he was greatly influenced by Shamsuddin, one of his cousins. He was a distributor of newspaper at Rameshwaram. अब्दुल कलाम के एक कज़न थे शमसुद्दीन, एंड अब्दुल कलाम जो थे उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, दैट इज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्टेड थे. In Abdul Kalam's childhood, he was greatly influenced by Shamsuddin, one of his cousins.
He was a distributor of newspapers at Rameshwaram, Dinamani. A Tamil newspaper was in popular demand in those days. अब्दुल कलाम के एक कज़न थे जिनका नेम था शमसुद्दीन. अब्दुल कलाम उनसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्टेड थे. शमसुद्दीन न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे विलेज रामेश्वरम में, एंड द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर वॉज दिनामनी. And this was a Tamil newspaper which was very much popular in those days. उस टाइम में ये वाला न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था. Kalam was too young to be able to read, yet he used to borrow a paper from Shamsuddin and went through it every day. Now, at that time, Kalam could not read the newspaper. He was too young, but still कलाम अपने कज़न से पेपर बोरो करते थे एंड गो थ्रू करते थे एवरी डे. ऑल्दो ही यूज्ड टू सेटिस्फाई हिज सर्च ऑफ नॉलेज बाय जस्ट लुकिंग एट द पिक्चर इन द न्यूज़पेपर. नाउ अब उन्हें इतना रीड तो करना आता नहीं था, बट जस्ट वो पिक्चर्स को देख के अपनी जो नॉलेज थी उसके सर्च को सेटिस्फाई करते थे, which is just a great inspiration for all of us. Once he learned to read, he always surrounded by books. Mr. Manikam, his neighbor, often said, Abdul, you are always sitting here in my library. And Kalam would smile at him sheepishly. एंड जब अब्दुल कलाम को रीड करना आ गया तो वो हमेशा अपने आसपास बुक्स रखते थे, वो बुक्स से ही सराउंडेड रहते थे. मिस्टर मानिकम जो कि उनके नेबर थे वो हमेशा उन्हें कहते थे कि आप मेरी लाइब्रेरी में ही रहते हो. And at this reason to Mr. Manikam, Kalam would smile at him shyly. Kalam read every book that he could lay his hand on and became a well-read person. He used to study the books with keen interest. And जो भी book Kalam पिक करते थे लाइब्रेरी से वो उसे कम्प्लीटली अच्छे से रीड करते थे, एंड दैट्स वाई वो एक वेल रेड पर्सन भी थे. He used to study the books with keen interest, and वो पूरे इंटरेस्ट के साथ उस बुक को रीड करते थे. In 1939, World War II broke out. Kalam was only 8 years old then. Tamarind seeds were in demand in the market. This gave little Kalam an opportunity to earn some money. He started to collect those seeds and sell them in shops. Thus, he earned 1 anna, that is 1 पैसा जिसे हम कहते हैं, every day. This was his first earning. So, अब्दुल कलाम जी ने अपनी फर्स्ट अर्निंग जो थी वो कैसे की? 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उस टाइम डॉक्टर अब्दुल कलाम 8 years old थे, एंड तब जो टैमरिंड सीड्स होते हैं, जो इमली के सीड्स होते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में थे. तो ड्यू टू दिस Kalam got an opportunity to earn and he started to collect those seeds. वो seeds को collect करते थे और जाके उन seeds को shops में sell करते थे. And from this, by selling the seeds of tamarind, he got his first earning. Shortly, emergency was declared in India during World War II. Due to it, trains began to run non-stop and did not halt at Rameshwaram station. Now I told you World War II 1939 में जब हुआ तो उस टाइम कलाम जो थे 8 years के थे, एंड देन उस टाइम जो इंडिया में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया जिसकी वजह से जो ट्रेन्स थी वो बिल्कुल नॉन स्टॉप चल रही थी. उनका कोई स्टॉपेज नहीं था रामेश्वरम स्टेशन पे. रामेश्वरम स्टेशन जहाँ पर जो अब्दुल कलाम के कज़न थे वो वहाँ से न्यूज़पेपर्स को अनलोड करते थे, बट अब पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ जो ट्रेन थी उसका कोई स्टॉपेज नहीं था. सो नाउ न्यूज़पेपर बंडल्स वर बीइंग थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन. शमसुद्दीन realized that he needed help. नाउ जो बंडल्स थे वो मूविंग ट्रेन से ही फेंके जा रहे थे. तो शमसुद्दीन जो कज़न थे कलाम के, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्हें किसी की हेल्प चाहिए होगी. तभी शमसुद्दीन ने कलाम से पूछा कि क्या आप मेरे असिस्टेंट बनोगे? विल ही वर्क अंडर शमसुद्दीन? तो शमसुद्दीन asked to the boy one day. Kalam, a hard-working boy, agreed readily. He picked up the bundles for his cousin every day and thus earned his first salary.
Clam was happy and proud to earn money. Now जब Clam ready हो गए अपने cousin की help करने के लिए, तो वो डेली बंडल्स उठाते थे एंड अपने कज़न की हेल्प करते थे. इस तरह उन्होंने अर्न किया अपनी फर्स्ट सैलरी. एंड क्लाम बहुत हैप्पी थे और खुद पे बहुत प्राउड फील कर रहे थे बाय अर्निंग द मनी. One day at school, Clam barged into a classroom without realizing that it was not his classroom. The teacher who was teaching in that class beat Clam with a stick, but Clam did not complain. Now अब एक दिन क्या हुआ, Clam जो थे बहुत फोर्सफुली एक क्लासरूम में एंटर कर गए और उन्होंने रियलाइज भी नहीं किया कि वो उनका क्लासरूम नहीं था. बट जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे थे उन्होंने क्लाम की पिटाई की एक स्टिक के साथ एंड क्लाम ने बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं किया. एंड वो जो टीचर थे वो उनके मैथमेटिक्स टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे, रामकृष्ण अय्यर. That year when Clam secured the highest marks in mathematics, the same teacher beamed and said, I beat this boy with a stick. Wait and watch, he will be a great man. Now, the same year when Abdul Kalam got the highest marks in maths, the same teacher, Mr. Ramakrishna Iyer, smiled and said that I beat this boy with a stick. Everyone wait and watch, Abdul Kalam will be a great man. Another teacher, Pandit Shiva Subramaniam Iyer, taught science to Kalam. He was fond of the boy as he was very intelligent. जो कलाम के साइंस टीचर थे पंडित शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे एंड वो कलाम उन्हें बहुत अच्छे लगते थे. कलाम वॉज वेरी फेवरेट ऑफ हिज साइंस टीचर बिकॉज वो बहुत इंटेलिजेंट थे. One day, his science teacher invited him for dinner at his house. However, as his wife was a loyal Brahmin, she did not serve him the meal inside their kitchen as he was a Muslim boy. Kalam did not mind. He sat with his teacher and ate the meal outside their kitchen. Now, एक दिन साइंस टीचर ने कलाम को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया. जो उनके साइंस टीचर थे पंडित शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उनके वाइफ ब्राह्मण थे एंड उन्होंने कलाम को अपनी किचन के अंदर मील सर्व नहीं किया क्योंकि कलाम मुस्लिम थे. बट कलाम ने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया, उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ. वो अपने टीचर के साथ किचन के बाहर बैठ के उन्होंने डिनर किया. A week later, Kalam was invited for dinner by his science teacher once more. And 1 week के बाद फिर से उनके science teacher ने उन्हें dinner पर invite किया. Kalam went willingly. Abdul, come into the kitchen and eat dinner with us here, said the teacher's wife. Now again, Kalam उनके घर चले गए without any hesitation. But next time जब वो गए तो उनके वाइफ ने, जो उनके साइंस टीचर थे, उनके वाइफ ने कलाम को कहा अब्दुल you can come in the kitchen. And this time अब्दुल कलाम ने उनके साथ किचन में बैठकर खाना खाया. Kalam was happy to see that change had come over the orthodox lady. She served the meal to him herself. The seeds of secularism were embedded in his mind with this episode. And next time जब वो उनके घर डिनर पे गए तो मिसेस अय्यर ने उन्हें किचन में डिनर करवाया एंड कलाम बहुत हैप्पी थे ये चेंज देखकर. ऑर्थोडॉक्स लेडी मीन्स ट्रेडिशनल लेडी, जो ब्राह्मण लेडी थे उनमें ये चेंज आया, ये देखकर कलाम को बहुत खुशी हुई एंड इनफैक्ट उन्होंने कलाम को खुद सर्व किया. The seeds of secularism were embedded in his mind with this episode. सेक्युलरिज्म होता है जब डिफरेंस हम लोग करते हैं, सेपरेशन होती है सिर्फ एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड उनके माइंड में ये विजिट से ये जो मैटर था एक सेक्युलरिज्म का उनके माइंड में फिक्स हो गया. As Kalam grew up into a young man, the mysteries of the sky continued to fascinate him. Abdul, where were you? Ami, I was looking at the beautiful seagulls at the beach. How skillfully they fly. I wish I too could fly. Kalam spent many hours staring at the sky. And every evening Kalam के मदर उनसे पूछते थे कि where were you? And most of the time वो डेली इवनिंग में
स्काई के तरफ देखते हुए ही स्पेंड करते थे, क्योंकि वो देखते थे द वे जो बर्ड्स होती थी, जो सीगल्स होती थी, वो फ्लाई करते थे, वो उसे देखते थे कि वो कितने स्किलफुली फ्लाई कर रहे हैं, एंड ही विश्ड दैट ही कुड ऑल्सो डू इट. So Clam spent many hours staring at the sky, wondering at the mysteries of the flight. No wonder he grew up to become a great scientist. And we all know Abdul Kalam was a great scientist. Kalam was elected as the 11th president of India, and he worked from 2002 to 2007 as the president of India. His values and personality went enamored by the people all over the world. उनकी जो values थी, उनकी जो personalities थी, and the way he ruled India from 2002 to 2007 filled people with love. Dr. Kalam has been conferred with the degree of Doctor of Science by 30 universities, academic institutions, and by 30 universities or institutions he was given the degree of Doctor of Science. He is the recipient of several awards, including the Indira Gandhi Award for National Integration, Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna. That is, उनको बहुत सारे अवार्ड्स के साथ रिवॉर्ड किया गया, ऑनर किया गया. Dr. APJ Abdul Kalam is truly a great man, but this great man left this world on 27 July 2015 after collapsing due to a lecture at the Indian Institute of Management in Shillong. And उनकी जो डेथ हुई 27 July 2015 में हुई, while he was just ended the lecture at Indian Institute of Management Shillong में. A great salute to this great man and to his dedication and devotion towards the country. A great salute to Dr. APJ Abdul Kalam to see his devotion and dedication, that is उनका जो love था, उनकी जो loyalty थी, and जो उन्होंने हमारी country के लिए किया.